Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve summary questions from CAT 2021 second slot. All the RC passages from CAT 21 slot 2 are already done and uploaded. Also, slot 3 as well as CAT 22, all the slots, all questions have been uploaded and put into suitable playlists. So if you haven't gone through those, strongly recommended that you also visit those playlists, solve previous year questions, check your answers, check the explanation, so that you get really good understanding of where you stand vis-a-vis your exam prep, your confidence with just a month to go for the exam. Anyway, but now let's get cracking with the summary question which came in CAT 21. Okay, so coming to the first question, rather for all the three questions which came in this slot, all three very doable, बहुत अच्छे लगे, or rather on the easier side. So for people who are good in VRC, I would recommend that for everybody actually, I would recommend that you pause this video here. I put in the timestamps for all the questions, for all the options, and go to those timestamps, solve these three questions, then come back and check your answers whether right or wrong. ठीक है? तब तक के चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A broad commentary about all the three questions. बहुत doable, बहुत easy नहीं, but easy. अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस है. आप थोड़ा सा अच्छे से स्मार्टली ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ. It is possible that for people who are good in VRC to get 3 on 3 here. ठीक है? 2 on 3 even an average aspirant should be able to get. ठीक है? तो चलो let's get cracking with the first paragraph. कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोला है, बहुत नॉमिनल चीज बोली है. So instead of walking you through one word by word or line by line in a typical cliche manner, let's go by a story based approach. तो क्या बोलता है ऑथर कि देखो यार, एक कैपिटलिस्ट है, ठीक है. कैपिटलिस्ट मतलब जो लोग बिजनेसेस ओन करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेसेस. ओके, पीपल विथ कैपिटल पावर इन देयर हैंड. कैपिटल बोले तो पैसा, ठीक है. एंड देन ऑन द अदर हैंड यू हैव वर्कर्स ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है. तो चल क्या रहा है, जब इकोनॉमी संकट में होती है ना, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ corporate bankruptcies going on, a lot of layoffs बोले तो जब जॉब से लोग निकाले जाते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट सिचुएशन. अब कैपिटलिस्ट तो देखो भैया, आखिर में पैसे वाला इंसान है, वो दिन रात पैसा पैसा ही सोचेगा. ओके, तो ये रहे हमारे मिस्टर कैपिटलिस्ट. इनकी आंखों में बस पैसों की चमक है. ओके, और ये दिन रात बस पैसे पैसे की बात करते रहते हैं. ठीक है जी. ओके. And then on the other hand, because of खराब मंदी वाला situation, because of layoffs, what you have is you have a bunch of workers who are of course not happy with their current position. अभी किसको अच्छा लगेगा ना, जॉब चले गई तो दुखी रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, कोई बेचारा रोते रहेगा. ठीक है. All right. So you have a ton of workers like this in an economy. तो ऑथर सेज होता क्या है, दैट एक बहुत ही अनलाइकली फ्रेंडशिप इनके बीच में क्रिएट हो जाती है बिटवीन अ कैपिटलिस्ट एंड दिस वर्कर. व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस कैपिटलिस्ट, ही इज लाइक भाई मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए मार्केट में. कंपटीशन है तो ऑफकोर्स हर इंसान का प्रॉफिट कम होता है. तो ही इज थिंकिंग कि भाई जो खराब माहौल हो चुका है अभी इकोनॉमी का, बिजनेसेस का, तो आई विल ट्राई टू हैव अ सिचुएशन वेयर देयर आर very few or hardly any competitor to me present in the market, and that will of course help him increase his profits. And on the other hand, what you have is workers who are like very sad, very in a pathetic situation, because of course these guys have lost their jobs, right? So what these guys do is they come together and they are now, you know, a kind of political block in themselves. So what these guys are saying is that boss देखो हम सबकी बैंड बजी है, तो we are kind of together, we are united, we are comrades. Okay, all right. So what happens is an unlikely friendship creates between these gets created between these two parties, where they are like भाई चलो हम दोनों भाई भाई. Okay, which is not expected. One guy is like super rich, other guys are like struggling for even their livelihoods. But what is happening, that author has said कि एक unlikely alliance इन दोनों के बीच में create हो गया in a particular specific scenario like this in the economy. But what is happening behind the scenes is कि चलो ठीक है, ये वर्कर लोग तो यूनाइट हुए because all of them are facing the same problem and they are trying to find a solution to their problems, right? But what is happening behind the scenes is that this capitalist guy, he is very smart, and he also has a very sinister thinking going on in his head. He is like, yo, I will use these guys. Okay, इनको मैं यूज करूंगा, इनकी पेन को, इनके हालात जो खराब है, इनकी मजबूरी वाली पोजीशन को, आई विल यूज इट एंड आई विल कैप्चर द पॉलिटिकल एजेंडा. तो कहीं ना कहीं मे बी द गाय विल ग्रैब पॉलिटिकल पावर फॉर हिमसेल्फ, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड यूजिंग दैट पॉलिटिकल पावर
यूजिंग दैट पॉलिटिकल एजेंडा he'll be able to set policies and माहौल कुछ ऐसा तैयार कर देगा जिससे उसका ये डॉलर, जिसका उसका ये प्रॉफिट ऊपर जाए. That's it. That's the narration going on in the paragraph. ठीक है. On the other hand, what is happening with the workers, that is not present, that is not given to us in the paragraph. कि ये भाई तो कैपिटलिस्ट खुद के स्वार्थ का, खुद के मतलब का सोच रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, बट what is happening with the workers on the other end, that is not quite clear to us. Okay, maybe it was given in the original source आगे जाके, but in the question the information is limited to only this. ठीक है. So with the basis of this information, let's get cracking and take a look at what the options are. ठीक है. चलो, ऑप्शन ए, the purpose of this unlikely alliance between industrialists and unemployed people during kharab mahol, during economic downturn is to stifle competition in free markets. Absolutely wrong. Why? Purpose इंडस्ट्रियलिस्ट का है कि भाई मुझे मार्केट में कंपटीशन नहीं चाहिए. द कैपिटलिस्ट इज लाइकली टू फोकस ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपटीशन, कि नहीं यार कंपटीशन मुझे नहीं चाहिए. वर्कर लोगों को कोई लेन देन नहीं है. वर्कर्स आर नॉट लाइक कि चलो चलो ठीक है बॉस हम तुम्हारी मदद करेंगे, दूसरे कंपनीज को दबा देते हैं. नो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट गोइंग ऑन एनीवेयर. तो बट व्हाट ऑप्शन ए ट्राइज टू पोर्ट्रे बिफोर अस इज कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये वर्कर्स साथ में आके दूसरे कंपटीशन को दबाते हैं मार्केट में. एब्सोल्युटली रॉन्ग, मिसेस द इंटेंट ऑफ द पैराग्राफ. सेकंड, in an economic downturn, okay, good, when the economy is in a bad shape, capitalists use the anxieties of the unemployed. Bang on point. बिल्कुल इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो चिंता है, उसका ये लोग यूज करते हैं कैपिटलिस्ट एंड देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू सेट द पॉलिटिकल एजेंडा टू सूट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. करेक्ट, एब्सोल्युटली ऑन द मार्क. बस यहाँ पर व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इज यू आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि कौन सा प्रोनाउन किस लिए है. Just give me a second, I'll mark it appropriately. अगर आपने प्रनाउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लिया, ये वाला जो देयर है ये किसके लिए यूज किया गया है? इट इज यूज फॉर कैपिटलिस्ट, कि कैपिटलिस्ट के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए. एंड इसके पहले वाला जो देयर है, देयर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसका है? ये इन अनएम्प्लॉयड लोगों. So if you ended up, doing a kind of cross connection कि ये political organization इनका, ये economic interest इनका, तो of course you may have interpreted option B as not in line with the paragraph and maybe on the basis of that ended up rejecting option B. But ऐसा नहीं है. To be very honest, actually the person who framed option B did not do a really good job at making this option, grammatically foolproof. थोड़ा गलत तो हुआ है because this second वाला there can, go here as well as it can go here. इसलिए बट ठीक है that amounts to splitting hair sort of. तो जाने दो, कोई बात नहीं, चलता है इतना चलता है. इतना ग्रामर नाजी हम नहीं बन सकते यार, एग्जाम में मर जाएंगे हम. ओके, तो चलो, yes, this is a very solid and it is the answer actually. बट फिर भी देख लेते हैं एक बार क्विकली कि what do option third and fourth talk about. Okay, third is saying economic downturn creates competition. Absolutely wrong. रादर इकोनॉमिक डाउनटर्न में कंपटीशन को मारे जाने की कोशिश चल रही है. ठीक है, तो बहुत गलत. कहीं पर भी कंपटीशन क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ आर्थिक मंदी, कहीं लिखा नहीं है. बाय बाय डी. अनलाइकली अलायंस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द अनएम्प्लॉयड हैपेंस ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न. सो फार सो गुड. इन विच दे कम टुगेदर टू यूनाइट पॉलिटिकली, ओके, एंड कैप्चर द पॉलिटिकल एजेंडा. उप्स, दिस इज वेयर ऑप्शन डी गोज डाउन. ही इज गोइंग डाउन. व्हाई? बिकॉज पॉलिटिकल एजेंडा कैप्चर कौन कर रहा है? कैप्चर कर रहा है ये इंडस्ट्रियलिस्ट. अनएम्प्लॉयड पीपल नहीं है इसमें इन्वॉल्व. दे आर नॉट कॉम्प्लिसेट इन कैप्चरिंग द पॉलिटिकल एजेंडा. ये सिर्फ पैसे वाला आदमी कर रहा है. बट व्हाट डज ऑप्शन डी टेल यू? नहीं, ये दोनों पार्टी साथ में आके मचा रहे हैं खुद का. रॉन्ग ब्रो, रॉन्ग. सो आउट. ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ऑप्शन बी इज द आंसर. स्टिल इफ एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू. Yo, all right, coming to the second question now. Interesting है, ज्यादा कुछ नहीं. Once again over here, what the author is saying is creativity actually economic progress drive करती है. very important. It is the engine of economic progress. चलो, बहुत अच्छी बात है. Good, creativity, innovation, all right. तो बहुत सारे organizations are devoted to studying it, promoting it, blah blah blah. लेकिन बड़ी दुख की बात हो चुकी है. क्या हो गया कि जो सक्सेस है क्रिएटिविटी का, जो इतना अच्छे से उसको स्टडी किया गया, जो इतने सारा उसका प्रमोशन चल रहा है,
that itself has eroded क्रिएटिविटी की एक्चुअल स्टेबल आइडेंटिटी। मतलब कि क्रिएटिविटी है क्या, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, ये बात यार खो चुके हम। इट इज नाउ सो इन्वेस्टेड इन वैल्यू, मतलब इतने लोगों ने उसके अंदर अब इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इतने लोग उसके हाथ धो के पीछे पड़े हैं, दैट इट हैज बिकम इम्पॉसिबल टू डिफाइन, इम्पॉसिबल टू चेक उसका करेक्ट मीनिंग, टू पुलिस इट्स मीनिंग। मतलब पुलिस यहाँ पर लिटरली हैव टू टेक द मीनिंग कि पुलिस करते क्या है। ओके, व्हाट दे डू इज दे टेक केयर कि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज थोड़ा सा लाइन पे रहे, बेसिकली केओस में डिसेंड ना हो। दे एंश्योर दैट सम पर्टिकुलर लॉ एंड ऑर्डर, सम पर्टिकुलर टेम्पलेट के तहत हमारी सोसाइटी रहे। तो सिमिलरली हियर यू कैन अप्लाई दैट मीनिंग कि अब इतना रैंडमनेस, इतना केओस आ गया है विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिविटी, व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, दैट इट हैज नाउ बिकम इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू डिफाइन कि भैया क्रिएटिविटी होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और किन तरीकों से वी कैन आइडेंटिफाई एंड वी कैन एनकरेज इट। इम्पॉसिबल हो गया। So this is like a situation जहाँ पे एक अनार सौ बीमार टाइप, या फिर दिस इज अ क्लासिक सिचुएशन ऑफ जहाँ पे इमेजिन इमेजिन मैसिव मैसिव बिल्डिंग, बहुत बड़ी, एंड क्रम्बलिंग अंडर इट्स ओन वेट। इतना बड़ा महल बना दिया, इतना टॉल स्काई स्क्रेपर बना दिया आपने कि अब वो खुद की ग्रेविटी से ही खुद कोलैप्स हो रहा है। ओके, एक्चुअली इसके पीछे फिजिक्स है दैट यू कैन नॉट बिल्ड बिल्डिंग्स लाइक 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर tall. What is the tallest building that we have in the world, right? The Burj Al Khalifa or Burj Al Arab, what I don't know what it's called as of this moment. They keep on changing its name, but whatever its name be, उसका हाइट आप देखो कुछ तो 800 मीटर्स के अराउंड है। ओके, बट यू हैव माउंटेन्स विच आर लाइक माउंट एवरेस्ट विच इज 8 किलोमीटर्स टॉल, बट बिल्डिंग आप नहीं बना सकते बिकॉज इट विल कोलैप्स अंडर इट्स ओन वेट। ठीक है, बट एनीवे आई एम डाइग्रेसिंग अ लॉट, शिट। चलो, कमिंग बैक, तो व्हाट इज द ऑथर सेइंग इज कि क्रिएटिविटी awesome thing, but major but, okay, too much confusion, too much invested value, too much investment interference is happening। तो जिसके वजह से यार मीनिंग चले गया उसका, कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, किन तरीकों से हम क्रिएटिविटी को पुश कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड व्हाट इज नाउ हैपनिंग इज, ऑथर इज सेइंग ओवर हियर कि बहुत सारे लोग अब ये फील करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग, कि इतनी खिचड़ी हो गई ना यहाँ पे, that so many people have now jumped onto this wagon, that this undue obsession with the idea of creativity, where everybody is trumpeting their own drum कि हम creative, हम जानते हैं क्या होती है creativity, हम जानते हैं क्या होता है innovation, डिंडोरा पीट रहे हैं सब लोग पागल हो चुके हैं इसके पीछे। तो that is actually getting in the way of real genuine creativity। oops, so it's like यार, too much crowding has happened, too much crowding, too much obsession, so genuine creativity is getting damaged। हैम्पर्ड बोल दो, डैमेज थोड़ा ज्यादा हो गया, हैम्पर्ड बोल सकते हैं बस। अगर मैं रियल लाइफ आपको इसमें एग्जांपल दूं तो थोड़ा सा अलाउ मी टू मेक एन ऑफ हैंड रिमार्क। इट्स लाइक पीपल आर सेइंग कि यार देखो, कोई भी ऐरा गैरा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, एनी रमेश तुरस इज कमिंग एंड getting obsessed with the idea of creativity, pushing forward their own idea of what it means and all। तो जो लोग genuinely creative है ना, उनको बहुत तकलीफ जा रही है समाज में। It's like Christopher Nolan trying to make path-breaking films, and then Salman Bhai comes on the scene and makes amazing movies like किसी का भाई किसी की जान। तो उस वजह से यार बेचारे नोलन को तो तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि सही बात है ना, मूवी मूवी बोलते हैं हम एट द एंड ऑफ द डे। On one hand, you have a guy who is like the Dark Knight, Inception, and Oppenheimer, and on the other hand, you have brilliant creations like there are too many to be named, to be honest। लेटेस्ट वाला ही ले लो, किसी का भाई किसी की जान, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है that genuine creativity is getting hampered। बस इतना से बात हुई है। तो लेट्स गो अटैक द ऑप्शंस। इन दिस केस एक बात आपको ध्यान से देखना है, व्हेन इट कम्स टू समरी, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस गेट थ्रोन आउट। व्हाई? बिकॉज दे डू दिस काइंड ऑफ क्रिस क्रॉस, एक क्रॉस कनेक्शन हम कहते हैं ना। आप फोन आपके दोस्त को लगा रहे हो पर लग गया किसी और अनजान इंसान को, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉस कनेक्शन ऑफ सॉर्ट। तो दैट इज डन इन अ लॉट ऑफ रॉन्ग ऑप्शंस। कि कोई पार्ट पैराग्राफ में यहाँ पे बोला है कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो व्हाट योर ऑप्शन विल डू इज इट विल टेक दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन
एंड जबरदस्ती का कनेक्टेड विद सम अदर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, जिससे कोई लेन देन भी नहीं है उसका, एट नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. तो इफ दैट हैपेंस देन यू कैन इमीडिएटली थ्रो आउट दोज ऑप्शंस. ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं. एंड हियर द आंसर हैज टू बी, आई थिंक द फर्स्ट वन, यस इट इज द आंसर. क्या कहता है कि वैल्यू असाइन्ड टू क्रिएटिविटी टुडे, इट हैज टेकन अप सच मैसिव proportions कि the concept itself has lost its real meaning. Okay, yes, is it given over here? Yes, it is given. Please look at the paragraph where I am making these red arrows. Exactly, author has confessed that it is impossible to determine its meaning. Concept has lost its real meaning. Correct, because of a lot of crowding there. And what is this leading to? This is hampering the engendering of real creativity. Okay, so there is a slight shortcoming in option 1 कि ये जो second वाला part है ना, this is hampering engendering of real creativity. ये वाला part author should have given a headline before it that some people believe. ठीक है, और many people believe. यहाँ पे clear cut हमें दिया है passage के अंदर में. ठीक है, but option A does not really give that to us. वहाँ पे एक छोटा सा flaw हुआ है. Ideally speaking, author should have mentioned this कि many people and organization believe this, not everybody. बट ऑप्शन ए में वो मेंशन नहीं है, तो देयर इज अ थ्रेट ऑफ जनरलाइजेशन हैंगिंग ओवर आवर हेड्स. बट एज यू विल सी, ऑप्शन बी, सी एंड डी आर इवन मोर टेरिबल इन कंपेयर्ड टू ऑप्शन ए. सो वी विल हैव टू लेट दिस जनरलाइजेशन वाला थ्रेट स्लाइड. ओके, तो दूसरे ऑप्शन देखते हैं क्या दे. बट बाय द वे, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एनजेंडरिंग. एनजेंडरिंग को आप बहुत स्ट्रांगली चांस है कंफ्यूज कर बैठो घाई गड़बड़ में अगर पढ़ने गए. यू विल एंड अप रीडिंग इट एज एंडेंजरिंग. ओके, एंडेंजरिंग मतलब खतरा पैदा किया, यू आर थ्रेटनिंग समथिंग. एंड एंजेंडरिंग मतलब गिव बर्थ टू समथिंग, गिव राइज टू समथिंग. दैट इज कॉल्ड एज एंजेंडरिंग. तो व्हाट डज दिस पार्ट से ओवर हियर इन ऑप्शन ए, कि जो इतनी ज्यादा गर्दी हो चुकी है क्रिएटिविटी वाले ऑब्सेशन उस आइडिया को लेकर, कि दैट गर्दी, दैट क्राउडिंग इज हैम्परिंग द बर्थ ऑफ रियल क्रिएटिविटी. Yes, that is what is given, that genuine creativity is hampered. So that is correct. गलती से भी endangering नहीं पड़ता. दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं. प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के. इट्स जस्ट अ स्विच बिटवीन टू अल्फाबेट्स, बट मैसिवली डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं. By the way, as a side comment, I cannot help but comment here, given the old guy that I am. Friends fan, अगर कोई Friends fan है in the house, तो word has lost its meaning. I am reminded of this, season 1 में एक episode है where this guy comes all high on weed and all. I think the episode is called as the one with the stoned guy, something like that in season 1. यहाँ पे वो बोलता है tartlets, tartlets, tartlets. Oh, word has lost its meaning. So side meme reference, I can't help. Let's go option B. What is wrong over here? The industry that has built up around researching what comprises and encourages creativity. अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक okay. That industry has destroyed creative process itself. Hell no, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. People who are committed to producing original thoughts, मतलब ये first half वाला industry that is tasked with encouraging creativity, they now think कि यार undue obsession is creating us trouble, undue obsession is creating obstacles in our path. ये लोगों ने बर्बाद नहीं किया क्रिएटिविटी, बाकी लोगों की गर्दी की वजह से प्रोसेस बर्बाद हो रही है. तो a wrong causal link painted over here. Very wrong, very wrong. Cannot go ahead with it. Option C, creativity has proliferated. वर्ड टू वर्ड इन्होंने पैसेज में से लिया है. यहाँ पे प्रोलिफरेटेड का मीनिंग होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन क्वांटम, इंक्रीज इन नंबर. ओके, तादाद इज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट. संख्या इतनी बढ़ गई है, मात्रा इतनी बढ़ गई है कि that it is no longer a stable process. Wait a minute, stable process, what do we have over here? No, we have stable identity. What is stable process? These are very different things. कितनी गलत बात है यार. कहा stable identity? यार आइडेंटिटी स्टेबल नहीं है. मीनिंग इज चेंजिंग एवरी डे. वन डे इट मीन समथिंग, सम अदर डे इट मीन समथिंग, बट ऑप्शन इज सेइंग में यार प्रोसेस ही स्टेबल नहीं है. एक मिनट यार, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है. ठीक है, and its mutating identity, मतलब बदलती identity every day, that has stifled the creative process. Okay, tries to capture the second half of this hampering real creativity, hampering genuine creativity वाला पार्ट कैप्चर करने की कोशिश की ऑप्शन सी के सेकंड हाफ ने, बट गलती हो गई उनके हाथ से by using this once again a wrong causal agent.
The changing identity is not stifling real creativity. The insane obsession in जनता का mind, that is creating the obstacle. तो कहीं ना कहीं once again because of this couple of words over here, option C loses on the game. ठीक है? And then coming back, sorry, not coming back, but coming to option D, obsession with original thought, मतलब creativity, how it can be promoted, research, blah blah blah. The obsession with creativity has made it impossible for people and organization to define the concept anymore. अच्छा, ठीक है, ये मतलब frankly speaking statement D जो दिया है true है, it's not false, but when you compare it with option A over here, the second half is lost कि obsession की वजह से, madness की वजह से genuine creativity getting hampered. What option D just focuses on is कि यार हम तो definition नहीं बना पा रहे हैं, कितनी तकलीफ में है हम, impossible to pull its meaning. So able to capture only the first half of the narrative. सेकेंड हाफ की यार असली पंटर तो खतरे में है, क्रिस्टोफर नोलन बेचारा टेंशन में आ गया है, वो पार्ट नहीं दिया यहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी गोज फॉर अ टॉस. ओके, so once again, if any doubts please drop them in the comment section, but I hope that you got it correct. कहीं ना कहीं वही के वही पे वर्ड प्ले किया है, nothing more than that. ठीक है, चलो with that let's go to the next question. बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये तो, मतलब I won't even bother going through the paragraph one by one. I will not insult your intelligence. ऑथर कहता है देखो बॉस, दो फील्ड्स है, बायोलॉजिस्ट वाला और है एक फिजिसिस्ट वाला. ठीक है जी. रही बात आप रिसर्च जो करते हो, जर्नल में पब्लिश करने की प्रथा होती है साइंटिफिक कम्युनिटी में, दैट व्हेनेवर यू डू सम रियली गुड रिसर्च यू मेक अ गुड पेपर आउट ऑफ इट एंड यू पब्लिश इट इन वेरी रेप्यूटेड जर्नल्स, जहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट लोग, दूसरे लोग जो आपकी कम्युनिटी के पार्ट है, साइंटिफिक कम्युनिटी के, दे विल गो थ्रू योर पेपर, दे विल एनालाइज इट, दे विल कमेंट ऑन इट, एंड दिस इज हाउ आइडियाज प्रोग्रेस, दिस इज हाउ क्रेडिट्स ऑफ इन्वेंशन एंड रिसर्च आर गिवन. ठीक है, बट इसके अंदर दिक्कत क्या होगी, दैट देयर आर सम पीपल हु प्रेफर टू टेक अ सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट. दे आर लाइक कि बुक में तो हम करेंगे बाद में, पीयर रिव्यूड जर्नल में तो हम बाद में पब्लिश करेंगे, उसके पहले हम ना फ्री में इंटरनेट पे पोस्ट कर देंगे, पब्लिशिंग रिसर्च डिजिटली, नेट पे पब्लिश कर दिया यार. ओके ठीक है, तो ऐसे लोगों को, रादर ऐसी प्रैक्टिस को लेकर, देर आर टू वेरी अपोजिट ओपिनियंस गोइंग ऑन व्हेन इट कम्स टू, एंड दिस प्रोसेस बाय द वे इज कॉल्ड एज व्हाट, प्री प्रिंटिंग. ओके, प्रिंटिंग जर्नल में हो रहा है, उसके पहले जब आप वेब पे डाल देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज प्री प्रिंटिंग. तो बायोलॉजिस्ट आर लाइक, व्हेन यू आस्क देम ब्रो व्हाट इज योर एटीट्यूड विद रिगार्ड टू प्री प्रिंट, तो बायोलॉजी कम्युनिटी जो है, बायोलॉजिस्ट लोगों की, दे आर लाइक पिस्ड ऑफ, दे आर लाइक हेल नो. Many of them are very reluctant, they are not happy with it, they are not okay with it. All right, but on the other hand you have physicists who are quite liberal with respect to this ideas. क्या बोला है कि bro what do you think about preprint, they are like oh bro we are okay with it, we don't have a problem, we are okay. ठीक है, बस हो गया. और प्रॉब्लम इस वजह से ये आती है कि बायोलॉजिस्ट को इच्छा है पब्लिश करने की वेब पर, इंटरनेट पर खुद का रिसर्च, बट ये लोग बेचारे टेंशन लेके बैठे हैं कि यार मेरे फेलो बायोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे, व्हाट विल माय कॉलीग्स थिंक, ओ माय गॉड एंजाइटी इज क्रिपलिंग मी. ओके ठीक है, चलो जाते हैं. तो इसका आंसर ऑप्शन बहुत ही सिंपल, बहुत 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 इजी, सेकेंड ऑप्शन में. कि कंपेयर टू बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट भाई लोग बहुत लेस कंजर्वेटिव है, मतलब कि दे आर मोर लिबरल, दे आर इजी गोइंग. किस बात में, इन देयर एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल प्री पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स व्हिच अलाउज फॉर फास्टर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज. हाँ जी, ये पार्ट मेरे हाथ से मिस हो गया, आई एम रियली सॉरी. कि प्री प्रिंटिंग को लेकर ऑथर इज सेइंग ये एक बहुत अच्छी बात है, इस वजह से आप जो नॉलेज है समाज में आप बेहतर तरीके से पुश कर सकते हो, बेहतर तरीके से फैला सकते हो. तो ऑथर सेज प्री प्रिंटिंग इज अ वेरी गुड थिंग टू डू. ऑथर का स्टैंड इज वेरी क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, चलो, व्हाई आर द अदर ऑप्शंस रॉन्ग, let's go to the option, third option. Let me jump option here, that preprints of research are frowned on by some scientific fields. ठीक है जी, yes correct. some scientific के अंदर में आप बोल सकते हो कि बायोलॉजी वाले लोगों को पसंद नहीं, some journals don't like it, so this is appropriate quantifier, I like it, good. लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो गई कि प्रीप्रिंट्स आर एक्सेप्टेड अमॉन्ग बायोलॉजिस्ट, हेल नो. ये क्या बात बोल दी भाई, बिल्कुल नहीं. पैसेज में तो क्या बोला है हमें कि बायोलॉजिस्ट की कम्युनिटी ये तो चिढ़ती है प्रीप्रिंट से, तो गया अपोजिट.
out. T. While digital publication of research is gaining popularity in many scientific disciplines, good, so far so good, almost all journals are reluctant to accept papers. अरे नहीं भाई साहब, almost all 80-90% की आप गारंटी दे रहे हो, बट हमारे पास में पैराग्राफ में क्या दिया है? Some journals don't accept. अभी हाउ कैन यू टेल मी दैट सम और ऑलमोस्ट ऑल बराबरी के होते हैं? बिल्कुल नहीं. देयर माइट बी 100 जर्नल्स आउट देयर, बट 10 जर्नल्स आर लाइक नहीं, हमको नहीं चाहिए प्री प्रिंटेड, हम फ्रेश माल ही पब्लिश करेंगे. अच्छा ठीक है, करो, ओके. बट व्हेन यू इंप्लाई ऑलमोस्ट ऑल, यू आर सेइंग कि 100 में से 80-90 पब्लिकेशंस आर एलर्जिक टू इट. रॉन्ग. ठीक है. टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि always handle your quantifiers and qualifiers very carefully. What is the quantifier given to you in the paragraph? It is some. What is option D doing? It is saying almost all. Bye bye bro immediately. Same guna, same taklif ho gayi hai option A mein, which is saying कि not accepted by most scientific communities. Preprints are not accepted by most. हमको क्या पता है? हमको बस इतना मालूम है, some journals don't like it and biologists का जो community है, they don't like it. अभी साइंटिफिक कम्युनिटीज तो कितनी भी हो सकती है यार, 50-60-100 फिजिसिस्ट लोगों की, केमिस्ट की, बायोलॉजिस्ट की. देयर माइट बी अदर 10 डिफरेंट साइंसेस आउट देयर ऑफ व्हिच वी आर नॉट इवन अवेयर. तो हाउ कैन यू टेक दिस गारंटी कि मैक्सिमम मोस्ट कम्युनिटीज को नहीं चलता? एब्सोल्युटली ऑफ द मार्क, आउट. ठीक है. तो एज यू कैन सी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, वेरी इजी, वेरी इजी. आई रियली रियली होप कि आपको 3 on 3 आ गए. ठीक है. But still, if any doubts, please mention in the comment section with the timestamp. More than glad to help you. If you like the content, please do not forget to like, share, and subscribe. If you have friends who are preparing for CAT as well, please share the playlist, please share the videos with them. Thanks a lot for your support. There have been very, very positive comments recently on the different videos that I've been posting. Helps a lot. I hope that your prep is going strong. All the very, very best with your prep. Some people are also giving NMAT as I'm publishing this. I hope that your exam is going good. CAT prep भी बहुत अच्छे से करो and let me know if I can be of any help to you. Till then, I'll see you in the next video. Tata, bye bye, and take care.